Guys, waiting for 2-3 minutes. We'll start at 17:05. Waiting for others to join. Meanwhile, please think of questions or issues which you are facing with especially availability zone and availability set. A few people contacted me a few messages. Messages were there stating they are not able to understand it a bit. Some of them wanted to repeat. Few of them are getting theory but not the practical. So today we will try to conclude this topic with everything with theory and practical. So if you guys have any questions, please do ask. Okay, guys, let's start. Uh, so I hope subscription trial period for Isaac has ended. So can we create a new one? Yes, anyone wants to volunteer to create a new subscription? Only one we required. Last time, two of them created and we wasted both of them. So any one of you who is ready to create? Henry, do you have a credit card? Yes, I can do. So please create one and let me know. So I will add other people also. I will calculate kitne Sure. add ho sakte hai. You create one and let me know. I'll create my own ID and give me access on your subscription level, and post that I will be sharing accesses to other people. So let me know whenever you are ready with your portal. Meanwhile, yesterday, Amit uh, and two more people, they asked me for, I think Naved was there. He's not here today. Amit is not here. So to all of them, I have given the access on my subscription. Uh, but yes, they are not here. So let's proceed, guys. Let's discuss availability zone and availability set. If you do not understand it today, from tomorrow, I will start it from scratch, from zero again. I mean, this topic. If I feel that most of the people are not getting it, but I have few confirmations as well, a positive confirmation where they are getting it. But our aim, our motto is to take all of them on the same page, to take all of you on the same page. Right? So let's start this. I will quickly start with the map which we have been discussing. With the same map I will start. And today, guys, I want you to answer, so at least I will know your level of understanding, that what are you understanding. Okay, so let me open this first and then we'll see. I can see we do not have many people today, so I'm expecting a lot of participation and answers from you guys. We may go one by one as well.
I'll go with this line. So Henty, could you tell me what is Azure geography? An area where there is at least one region with Azure presence. Could you give me one name, Azure geography name? Um, it's in the color of the grayish one, like North America or Europe. Right, but white color is representing. That's okay. No one will ask you Yeah, the color, white. but yes, you are correct. North America, Africa, Australia. If you click on this, do you see the region? This complete is Africa region. Okay, this complete is India region. ये जितना भी है ये पूरा India region है. Okay, यहाँ पर. Irfan, could you tell me what is a region? Sorry, this was geography we're discussing with Henty. This complete is India geography and Australia geography. What is a region? Region is wherein we have data centers. One at least, I mean, they have at least one data center present in the region, and I think the this color, the blue one, is representing the region. Okay. Juhi, would you please elaborate the same answer? What is region and a few more properties of region if you could tell me? Azure regions are those parts where yes, that's the same answer. Data center is available, and Anything else other than what Irfan told us? Anything else do you remember? What are the properties of region? How would I define what are the regions? उसमें क्या अलग हो सकता है? किस तरह के regions होते हैं? So if I want an extended answer from you on region, how would you elaborate that? I mean, answer is correct. Whatever Irfan and you gave, those answers are correct. But in an interview, it is always advisable to give an extended answer. Let the interviewer stop you because he or she also has a limited time. They will have 30 minutes or 60 minutes. तो खुद ही रुका देंगे आपको कि okay, fine, I got it. But if you give one-liner answers or with keywords, they will think that you do not know the concept well. So could you give an elaborated answer, please? What is a region? regions are those areas where we have availability zones. Okay. Or by the Azure region is a set of data centers that are connected through a dedicated low latency network. Right. This definition is coming from here, I guess, right? Yes. But yes. that is correct. I told you guys, whenever it is an interview question, you can refer to this document because these I have not, though I've typed it, but from Microsoft का site, वहां से हम लोगों ने इसको copy paste किया है, type किया है, whatever it is, but we have got it from there. So you can rely on these one, and you can where did it go? Let me check. Here it could be here. Basics, right? So geography, see, this is the definition. Though what Henty said, that is correct. But if you want to give a proper definition, this is what you will have to read. And when I'm saying region, you will have to read this. Region का इतना बड़ा ये है definition है that regions, they are connected by Azure backbone network. Now we will see what is there. What do I mean by backbone network? Uh, and region, it is not necessary a set of data centers. It could have one data center or multiple data centers. Region, we have availability zone region and a normal region, right? We could have one region in one geography, we could have multiple regions in one geography. That this could happen. So these are the properties you guys will have to talk about. At least दो से तीन points बोलो आप तो एक आंसर थोड़ा सा better लगता है. ठीक है. The backbone network, when I say, it means ये जो ये लाइन दिख रही है आप लोगों को, this line, right? What is this, guys? Is it some Azure line, or what is it? Or is it internet line of our globe? What do you think it is? Internet line. Anyone else who thinks this is Azure line, Azure's network?
Right, this is internet line, guys. That's okay. Okay, so but what it says that regions in one geography, those are connected with backbone network. Now, what does it mean? That if I'm talking about regions in India, so those two regions, those are connected directly with Microsoft has also its own line. ये इस तरह का इंटरनेट वगैरह का लाइन जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बिछा रखा है, नो इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है, but at least these two regions, Central India and South India, these are connected directly with the Microsoft backbone network. मतलब ये ट्रैफिक जो है इंटरनेट के थ्रू नहीं जाएगा. Now, if I want some traffic to flow from here to some other region, this might go from using internet. जो प्रॉपर इंटरनेट है उसको यूज करता हुआ जाएगा, तो आईपी एड्रेस का चेंजिंग, नेटिंग वगैरह वो सब होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? बट इट विल अल्टीमेटली इट विल यूज इंटरनेट, नेटिंग वगैरह वो सब होगा, दैट इज फाइन, but it will ultimately it will use internet. But here when I say Azure network, when I say Azure backbone network, it is not going to use internet. Is it clear, guys, the difference between Azure backbone network? So now if someone is asking you what is Azure backbone network, so what will you understand, or what do you understand by that? Azure is not using internet; it's using its own networking. Right. So when I say backbone network, it is not using internet. Okay. So it is not using internet, it is using Azure's own network. That is what Azure backbone network is. So now we discuss geography, we discussed region. Now within region, what type of regions do I have? Khalid, could you tell me what type of regions do I have? Are all regions same? Do they have some differences? Do we have some service difference? Do we have some zone differences? Could you give me an elaborated answer? Khalid, can you hear me? Kumail, can you hear me? Yes, Yes, well, Khalid, I can Kumail. hear you. Yes, Kumail, could you answer this? You said what is the difference between the zones, right? No, region. Describe region. I Okay. mean, whatever you know about regions, के region में क्या क्या होता है, क्या अलग होता है, इसमें कोई availability zone होता है, नहीं होता है. Region कोई थोड़ा सा और describe करते हैं फिलहाल. Okay. So regions again, it depends. Now some regions might be just a singular region which has one data center, and they do not have any multiple data centers, so they're just called regions. And there are other types of regions which are called availability zones. So in that one particular region, there would be 3 data centers. Okay, so for ensuring high availability. So and again, in regions you have regional pair also. This Azure goes ahead and decides from their end. We do not have the power to choose. So if when you choose an availability, regional pair, so it could be Central India and South India, for example, for maintaining data redundancy. So again, regions are again 2 types. One would just be a region, a singular one, and the other ones would be an availability zone where there would be 3 data centers. Good. So who did not understand about the pair region, you can ignore it. Pair region, we are still to be discussed. It is still to be discussed, so we will discuss the paired region. But whenever they ask for region, थोड़ा सा elaborated सा इस तरह से answer दो, the like Kumail answered, right? उसमें आपके पास region होता है, एक region normal region हो सकता है, एक जो है अवेलेबिलिटी जोन वाला रीजन होता है. डिफरेंस क्या होगा? एक नॉर्मल रीजन में जो है एक डेटा सेंटर हो सकता है, अवेलेबिलिटी जोन वाले में 3 डेटा सेंटर्स हो सकते हैं. ये हम लोगों के लिए हाई अवेलेबिलिटी में काम आएगा. सो दिस इज हाउ यू कुड आंसर. Jafar bhai, could you tell me what is availability set? Availability set is where we can availability set can be available in a region where single data center is there, and availability zone we have 3 data centers.
So that's a difference, and availability set won't be available in availability zone. It would be available in only in available in the region where there is a single data center. But what is availability set? Anyone else? Availability- Chuhi, would you like to try? What is availability set? Availability set is used for version failures. We use it whenever any what we say failure of application occurs. So there we use availability set. Anyone who wants to tell me that this set comprises of two things? What are those two things? किन दो चीजों को मिलके ये set बनता है? We have been All discussing domain this. and all update. domain and All update domain and update domain. Perfect. So guys, do not miss that. Whenever we are Okay. discussing availability set, you should remember this, that availability set comprises of fault domain and update domain. Now, who could tell me what is a fault domain and what is an update domain? Anyone can answer fault domain, other person can answer update domain. Wasim and Yogesh, why don't you guys try? One of you could, Wasim, you tell me what is an update domain. Yogesh, you could tell me what is a fault domain. Fault domain is basically within a data center. The fault domain concept will be like that. If there are racks in the data center, and racks have been divided into different power lines and the internet connection lines, so that there will be uh, very less loss of internet and power, because in fault domain, basically racks are divided with different power supplies and internet. Perfect, Yogesh. Answer is correct. Technically is correct. बस इंटरव्यू में इसको हमको थोड़ा सा अच्छे इसमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस में बोलना है. That we will cover. इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स कैसे है, that we will cover later. First, I want to see आप लोगों की technical understanding. So that is correct. Perfectly fine. Before I come to you for the update domain, Wasim bhai, one quick question I have. When Jafar bhai was answering, he answered that availability set we will have only in few regions, and where we have availability zone, we will not have availability set. So how many of you agree or disagree? Anyone thinks that that is correct, incorrect, whatever your thoughts are, feel free to share, please. I think every region will have availability set. It's not region specific, and it's not zone specific either. So Right. every data center will have a availability set, like a fault domain and update domain. Right. Availability set हर एक में होगा जाफर भाई. अवेलेबिलिटी जोन कुछ इसमें होगा. तो जहां पर अवेलेबिलिटी जोन नहीं है वहां पर हम अवेलेबिलिटी सेट से काम चला लेते हैं. इस तरह का है वो, एक छोटा वर्जन है, समझ लो आप उसका. और Okay. जहां पर अवेलेबिलिटी जोन होगा, फॉर एग्जांपल दिस रीजन, it has availability zone. And how do I know this? Looking at the color. Okay, so this zone has availability, this region has one availability zone, availability zone region. But still, if I want, I can use availability set here. Just because there is availability zone, that does not mean I have to use that. Is it clear, guys? Got it. So availability zone is something about like physical data center, but availability sets are the virtual machines. Is that correct? No, not entirely. I will explain it to you. I'll come to that again. Let's park that question aside for a minute. I will be coming to that. So Sohail bhai, I have one question over here. Yes. When it comes to availability zone, and when we are deploying a server or a machine, at that point, we can choose a region and select an availability set if it comes to but when it comes to availability zone, because it's HA, high availability, so it is not necessary that we need to choose an availability zone, and we can go for availability set in that particular region as well, right? Yes, you can go for availability set in any region. All region will have availability set, but availability zone, only few regions has availability zone, and it does not require, it is not compulsory for us to use those services.
Okay. Okay. Is it compulsory? What do you think? What do you guys think? If I am creating my server in this region where we have availability zone feature, but can I still go ahead and create a server without any redundancy? Do we have that option to Yes. create without redundancy? We'll see that again. Okay, so I hope that is clear. Yes, Wasim bhai, could you update what is a update domain? I think Yogesh described what is a fault domain. Could you describe what is an update domain? Uh, it is a group of it is logical group of just like that racks which is underlying in just like a hardware in under maintenance, and it is rebooted at the same time, just like multiple VMs in a uh, availability within a availability set. Great. Let me open an Excel file. I will elaborate this example again, and then we'll go to portal. I think going to portal will clear few of your doubts, because I have been observing कि ये topic थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए, but ये trust me, this is very easy. अगर ये मुश्किल हो रहा है तो आगे आप लोगों को काफी दिन issues हो गए. ये बहुत basic चीज है Azure की. We are starting. Okay, now let me open one and we'll see what is your understanding towards it. So let's say I have availability zone. I have availability zone 1. Okay, I am just taking an example for 1. How many fault domain can I have maximum? How many maximum fault domains can I have in an availability? Three. Is it clear, guys, that we cannot have more than 3? So how many fault domain I can have? Fault domain 1, fault domain 2, and fault domain 3. This is what I can have maximum. And then how many update domains can I have? 20. So update domain 1. And is it necessary to have 3? Is it necessary to have 20? Can I change those numbers? Can I say that I want Yes. 2? And can I have 1 fault domain? No, there is no Yes. point. No, I guess two Yes, for you domain. can. No, 1 I cannot have. Lo- Minimum One- 2 has minimum to be to there. maximum 3. Exactly, right? So let's say this is the setup I'm talking about. Now there is one application for which I want 20 servers. Okay, single application. उसी पे मेरा फ्रंट एंड सर्वर होगा, उसी पे मेरा बैक एंड सर्वर होगा, सब कुछ उसी पे होगा. बट फॉर दैट वन एप्लीकेशन ये सारा काम मेरा एक सर्वर में भी हो सकता है. स्पेलिंग, इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक्स गाइस if there are any. To which I am planning to have 20 servers. अब ये पूरे के पूरे 20 सर्वर्स में अगर किसी विदाउट एनी अवेलेबिलिटी जोन एंड विदाउट एनी अवेलेबिलिटी सेट एक ही रैक पे एक ही इस पे कर दूंगा, तो किस तरह की ये मिलेगी मुझको, किस तरह का HA वाला मिल रहा है? Which high availability segment am I getting? We discussed this yesterday. एप्लीकेशन के लिए कितने लग रहे हैं? It's overall 20. उसी Overall सर्वर 20, पे मैं okay. सब कुछ यूज कर रहा हूँ. Let's say So we are not getting high availability unless we increase the number of VM. By No, operating system पे operating system वाला Yes. availability मिलेगा. yes guys, we are getting some high availability. Which one? That was my question, which he already answered. So my application is app server, backend server, and database. I'm running all of this on one server. ठीक है, ये सब मैं एक ही सर्वर पे चला रहा हूँ. तो मेरा काम एक सर्वर पे भी हो ही जाता है. ये मेरा सर्वर है, इसी पे मैंने तीनों रोल इंस्टॉल कर दिए हैं, जहां पर मुझको बैकएंड भी मिल रहा है, फ्रंट एंड भी मिल रहा है और डेटाबेस भी मिल रहा है. एंड आई एम डन विद इट. यहाँ से यूजर्स जो है मुझको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. यहाँ पर इफ आई हैव माय यूजर्स, इसको मैंने किसी एक रीजन पे कहीं पर ले रखा है सपोज. ठीक है, माय यूजर्स आर एबल टू एक्सेस इट. ये किसी तरह की हाई अवेलेबिलिटी है क्या? डू आई हैव एनी हाई अवेलेबिलिटी हियर? ठीक है, दिस इज फाइन, मेरा काम चल रहा है इस पे. माय क्वेश्चन इज, एम आई गेटिंग एनी हाई अवेलेबिलिटी हियर? These are my users. Not unless we increase the number of Forget VM. forget the future course. As of now, जो आप देख रहे हो वहीं पर बस. Do we नहीं have मिलेगा. any high availability here? No. Is it clear to all of you? Yes. Okay. Now, if I say
ओके, Azure के सेम रीजन, सब कुछ सेम, कोई जोन नहीं, कुछ मैं कोई अवेलेबिलिटी सेट कुछ नहीं बात कर रहा हूँ। जहां पे मैंने पहला सर्वर इंस्टॉल किया था ना, उसी रैक पे मैं दूसरा सर्वर लेकर जा रहा हूँ सेम एप्लीकेशन के लिए। अब मैंने क्या कर दिया, बस इसमें काम डिवाइड कर दिया ये दोनों में, और ये कर दिया। Do I have any high availability now? If yes, what level? If no, then why not? How no? First Software question. Yes, level, you server have. level. Yes. किस तरह के फेलियर से मुझको अभी हाई अवेलेबिलिटी मिल रही है? Who could tell me? किस तरह के फेलियर से? 4 या 5 ऑप्शंस बताओ। Yes, OS level I got one. OS क्या होता है? सॉफ्टवेयर हुआ मेरा, राइट? OS क्रैश होता है, I am still getting high availability. Why? सर्वर 1 का OS डाउन होता है, सर्वर 2 का OS तो चालू है। नेक्स्ट थिंग, अगर VM सॉरी द हार्डवेयर का कैपेसिटी ओवर ये हो जाता है। एग्जैक्टली हार्डवेयर। सो वन वे डिस्कस सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो सकता है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में कुछ भी हो सकता है, मे बी इसका रैम चला गया, आई एम स्टिल गेटिंग सर्विसेज फ्रॉम हियर। इसका फैन चला गया, आई एम स्टिल गेटिंग सर्विसेज फ्रॉम हियर। इज इट क्लियर गाइस? इंटरनेट, पावर, Power. ISP, Yes. एनीथिंग, किसी भी तरह का फॉल्ट यहाँ पर हो रहा है, और फॉरगेट फॉल्ट, आई एम अपडेटिंग दिस, इस सर्वर को मैं अपडेट कर रहा हूँ, 2 घंटे के लिए रीस्टार्ट होने वाला है, आई एम स्टिल गेटिंग माई सर्विसेज हियर। सो देयर इज सम हाई अवेलेबिलिटी हियर। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये सब मैंने एक ही रैक पे लगाया था, ठीक है? ये सब मैंने एक ही रैक पे लगाया था। सी, अंडरस्टैंड गाइस, अगर मैं बोल रहा हूँ इसका पावर चला गया, दैट डज नॉट मीन्स पूरे रैक का पावर चला गया। एज ऑफ नाउ आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट वन सर्वर। सर्वर में भी प्लग्स लगते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? प्लग इन होता है, उसका भी वायर जा सकता है, उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सो हियर आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट वन सर्वर, कि एक सर्वर का अगर पावर चला गया तो सेम रैक में होने के बाद भी मेरा दूसरा सर्वर उसको लेटेंसी दे रहा है। बट नाउ दिस इज इन वन रैक, मैंने किसी रीजन के किसी एक में, इसी एक ही में चला गया था ये, ठीक है? अब वो जो है पूरा का पूरा रैक, या वो पूरा का पूरा रैक है, उसका पावर सप्लाई जो है वो चला गया। डू आई हैव एनी हाई अवेलेबिलिटी नाउ? ये जो पावर सप्लाई है, ये जो पूरा रैक को पावर सप्लाई आ रहा है, ये चला गया। डू आई हैव No, एनी हाई अवेलेबिलिटी नाउ? no. नो। आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट, राइट? सो टू अवॉइड दिस, व्हाट डू आई डू? मैं इसी तरह के जो है अलग अलग रैक्स पे रखता हूँ, ठीक है? सो नाउ लेट मी क्रिएट इट अगेन। सिमिलर सेटअप जो है मैं यहाँ पर भी बना रहा हूँ। एक ये दूसरा रैक है, और यहाँ पर तीसरा रैक है। Here I have 2 servers and here I have 2 servers, ठीक? और ये सब यूजर्स को मिलके कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आई हैव पावर सप्लाई, यहाँ पर भी आई हैव पावर सप्लाई, और यहाँ पर भी। ये सारे जो है सर्वर्स एक ही इसको कैटर कर रहेगा इस, ठीक है? सर्वर 3, एक ही एप्लीकेशन के लिए पूरे 6 सर्वर्स वी आर डिस्कसिंग। सर्वर 4, दिस इज 5, and this is server 6. Now if I tell you that power supply has been disconnected for this rack, do I have high availability now? Yes. Yes. And now if I tell you there is something wrong and we lost one more power supply here, do I have high availability now? This is Yes. also gone. Either power supply or ISP, for some reason both are. So you guys are getting it, right? Are you guys getting it कि availability set क्या होता है? सेट का मतलब क्या है गाइस? वो जो सेट बोल रहा है ना बार बार, कि ये जो है पावर सप्लाई का है, और इस तरह की एक लाइन बनाकर ये डिवाइड कर देते हैं इसको, जहां पर अपडेट वगैरह को भी इसी में कवर कर लेते हैं, कि अपडेट होने वाला हो तो दे विल मेक श्योर कि सारे सर्वर्स एक साथ अपडेट ना हो। तो ये जो बन गया पूरा, ये एक सेट हो गया। वेलकम टू दैट। पोर्टल पे जब जाते हैं वहां पर आ रहे हैं हम वैसे। सो दिस क्लियर बाय द वे, दीज टू टर्म्स? नाउ ऑल ऑफ दीज, ये सब जो है ना, ये एक ही डेटा सेंटर में, खराड़ी इॉन में जो हमारा डेटा सेंटर है, उसी में रैक है, सब कुछ है। नाउ द नेक्स्ट सिनेरियो इज कि यहाँ पर बाढ़ आ गई और ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये डाउन हो गया। दिस कंप्लीट डेटा सेंटर, नॉट रीजन, कंप्लीट डेटा सेंटर इज डाउन। डू आई हैव एनी हाई अवेलेबिलिटी नाउ? No. यस गाइस, आर यू गेटिंग इट? एनीवन हैज एनी डाउट? किसी को कुछ नहीं समझ में आया?
ठीक है, इस रैक्स और ये सब अवेलेबिलिटी सेट जो मैं बता रहा हूँ ना, वो सब इसके अंदर हो गए, इस बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, इस बिल्डिंग के अंदर है, तो एक सेट पे कुछ इश्यू आ जाता है, सो दूसरे सेट से हम लोगों को अवेलेबिलिटी सेट के थ्रू सर्विस हमारी मिलती होगी। अगर इस बिल्डिंग के अंदर इंटरनल कुछ ये हो रहा है, तो 1 2 3 अपडेट फॉल्ट डोमेन है, इसमें से कोई एक चला जाता है, दूसरे से सर्विस मिल रही है। बट द क्वेश्चन हियर नाउ इज, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग डाउन हो जाती है, यहाँ पर फ्लड या कुछ आ गया है, then do I have any high availability? I used availability set वाला feature. So do I have any high availability as of now? कोई बैकअप है मेरे पास अभी? No. नहीं है, राइट? No. तो इस केस में कब बैकअप मिलता है मुझको कि instead of availability set, if I would have used availability zone. Now availability zone में कैसे होता है? Let me draw it for you. अब हम यहाँ पर फिर से आते हैं. How will it on availability zone? We'll see that. Sorry, availability zone I meant. Availability set we already saw, हम लोगों ने देख लिया. ये है suppose some region जिसमें हमारे पास availability zone का feature available है. ये एक data center हो गया, एक building. This is second building and this is third building. Now same thing, एक application है जिसके लिए मुझको एक ही server चाहिए था, but high availability के लिए मैं 5-6 servers ले रहा हूँ. So this is my server 1. Now these are not rack guys, these are data centers. ठीक है, just similar देख रहे हैं इसलिए don't get confused. These are data centers. यहाँ पर server 2, यहाँ पर server 3 and 4, and here I have server 5 and 6. Now guys the question is, यहाँ पर अगर पूरा and all of these are connected with each other, they are syncing, एक ही application को cater कर रहे हैं. That is by default. I will not be repeating that. Even if I don't, you guys will have to understand. If you say कि ये अलग अलग सर्विसेज को दे रहे हैं, तो वो किसी तरह से हाई अवेलेबिलिटी हुए नहीं, वो इंडिविजुअल सर्वर्स हो गए थे. ठीक है, सो इट इज implied, already implied that when I'm talking about some high availability, तो ये दो एक दूसरे से synced है, ये सब मिलकर एक ही सर्विस को cater कर रहा है. मतलब ये भी पेटीएम, ये भी सब कुछ पेटीएम को ही cater कर रहा है. ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये पूरा रीजन है, रीजन मतलब पूरा सिटी है, समझ लो पुणे सिटी या जिस भी सिटी में अवेलेबिलिटी जोन होगा, पुणे में नहीं है. आई हैव बीन रिपीटिंग दिस मेनी टाइम्स, डोंट गेट कंफ्यूज. सो लेट्स से ये इयन वाली खराड़ी की बिल्डिंग है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है यहाँ पर दिस इज डाउन नाउ. सेम पहले वाला ही सिनेरियो. नाउ कुड यू टेल मी इफ आई हैव सम हाई अवेलेबिलिटी और नॉट? Yes. फ्रॉम वेयर विल आई Yes. गेट माय सर्विसेज नाउ? From 3, 4, and 5, 6. 3, 4, 5 and 6. Perfect. Now let's say for some reason Hinjewadi ka bhi down ho gaya. Do I have availability or now? Not as Yes. of now. Yes. 3 and 4. Right. And if this one also goes down, then I do not have high availability if I have selected Azure Availability availability zone, right? ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई फीचर ही नहीं है कि पूरा रीजन जाने पे क्या होगा. वी हैव डिजास्टर रिकवरी है जहां पर रीजन जाने से दूसरे रीजन से भी सर्विस मिलती है कि ठीक है पुणे का रीजन चला गया तो गिव मी सर्विस फ्रॉम चेन्नई रीजन, वो भी हो सकता है. बट वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट. अवेलेबिलिटी जोन की लिमिट यहीं तक है, अवेलेबिलिटी सेट की लिमिट यहाँ तक है कि ये 3 रैक्स जो सेट बने हैं रैक्स के, वो रैक्स तक वो बेयर कर पाएगा. पूरा डेटा सेंटर चला गया तो अवेलेबिलिटी सेट की लिमिट खत्म हो गई. अवेलेबिलिटी जोन की लिमिट कहाँ तक है कि एक डेटा सेंटर चला गया, दूसरा डेटा सेंटर चला गया, ठीक है, पूरा रीजन अगर डाउन हो गया, पुणे ही डाउन हो गया, पूरा रीजन फॉर सम रीजन, एनीथिंग, वॉर वगैरह किसी भी टाइप का रीजन, पूरा पुणे रीजन डाउन हो गया, देन हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी नहीं होगी इसके बाद. बट रेयरली इट हैपेंस, ऐसा कभी नहीं होता, बहुत ही कम चांसेस में होता है ऐसे. इज इट क्लियर बाय द वे? Yes. यस गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. तो जोन व्हाइल क्रिएटिंग द सर्वर, जैसे हम एक सर्वर बनाते हैं ना, तो इट विल आस्क यू कि आपको कौन से जोन में रखना है. तो फर्स्ट हम इस जोन में रख सकते हैं, सेकंड इस सर्वर भी इस जोन में रख लो, थर्ड सर्वर ऐसे. बट अवेलेबिलिटी सेट बनाते वक्त वो पूछता नहीं है कि कौन से फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन में आपको सर्वर रखना है आपका. यू विल हैव टू क्रिएट एन अवेलेबिलिटी सेट, जैसे भी यहाँ पर हम बना रहे हैं AZ set 1, एंड यू विल हैव टू सेलेक्ट कि इस सेट में मुझको कितने फॉल्ट डोमेन और कितने अपडेट डोमेन रखने हैं. द मोमेंट यू डिसाइड दैट, लेट्स से दैट आई हैव क्रिएटेड वन
availability set जहां पर I said मुझको 3 fault domain चाहिए because I cannot have more than 3. अंडरस्टैंड गाइस, फॉल्ट डोमेन मतलब एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। उतने आपको आईएसपीस चाहिए, उतने आपको पावर सप्लाई चाहिए, उतने एसी, बहुत सारी चीजें चाहिए। अपडेट डोमेन इतने क्यों है? अपडेट डोमेन इज समथिंग बहुत बेसिक चीज है। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, प्लानिंग अच्छे से करनी है कि कितने जो है कैसे अपडेट हो गए। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इसलिए अपडेट डोमेन हमारे पास बहुत है। वी कुड हैव अप टू 20। नाउ गाइस, आई एम प्लानिंग one application with 20 servers. Okay, AZ set 1, all of them will be a part of availability set 1. ठीक है, so which level of high availability am I taking? If I'm taking this set, this availability, and my region is down, my complete data center is down, forget region तो बहुत next हो गया, data center is down, then is it helpful? ये वाला scenario मुझको help करेगा क्या? I'm taking this feature availability set and then I say कि मैंने अवेलेबिलिटी सेट तो ले रखा है, 20 सर्वर्स भी मैंने ले रखे हैं, बट वो पूरा डेटा सेंटर ही डाउन हो गया, देन am I getting any high availability guys? No. Yes guys, any doubt? इतना confusion क्यों है आंसर में? Yes, somebody already answered no, but what about others? Guys, this is about to finish. I will stop it and starting it immediately so we don't lose the flow.